Now, what is your sense of inflation? When do you think we get to that coveted 6% and below? You see, first thing you mentioned about coordinated action, I think I must mention that the way I see it is that we have entered into another phase of coordinated action between the fiscal and monetary authorities to check inflation. RBI has taken a number of steps over the last 2 or 3 months. In fact, I would say much earlier we have been taking steps, but somehow certain sections of the market have missed it, and I will explain to you how. Now, the government has now taken action on wheat, on intermediaries and various kinds of intermediaries, raw materials, and of course the big one on petrol and diesel. Now, all these put together will definitely have a sobering impact on the inflation going forward. The petrol diesel tax reductions have been announced on in the weekend, and in RBI we are we are back on the drawing table. In fact, we are on the drawing board almost every day. So we will rework our numbers and give out the numbers in the next MPC in the first week of June. Okay. No, the reason why I'm asking you is, I did a poll of CNBC TV 18 poll of economists. They don't see the 6% mark coming till fourth quarter. That is Jan-March quarter. So it looks like you will have to have 3 quarters of CPI above 6%. No, you see, October is still quite a distance away. So let's not try and let's not speculate from this point of time. There could be other actions also in the intervening period. And October is still, today we are in May, so still about 5 months left. So let us see how it plays out. And I don't want to really, I cannot give a number today because we are working it out. I think MPC, the next MPC in June is the right moment when we can say what is the inflation projection that we have in mind. When last year, you see, by and large, the what you call the professional forecasters, their number moves in tandem with the RBI. Their numbers are sometimes lower, their numbers are sometimes higher. Now it is distinctly higher, sir. No, your last number is 5.7. Pre-cut, fuel cut, the average on the street was 6.5 to 6.8. No, I'll tell you, last year, or rather this year in February, when we gave 4.5, which many people thought was very optimistic, and if you ask me, I can explain you why it was not optimistic. The professional forecasters were about 5%. Yes. And subsequently, when we moved to 5.7%, I think the professional forecasters were around 5.5 or 6, around that percentage. I got above 6. So maybe a little above 6. So they both are moving in tandem. And so therefore, my number, RBI number, we will give it out in June. And also, without working out the numbers and in the run-up to the MPC, it will not be correct on my part to give out a number. Fair point. Okay, let me come to interest rates, the rate hikes. Now, when you made your speech in the monetary policy statement on May 4th, and if I read Dr. Patra's minutes, you seem to give the impression that you want to come to the 5.15, that is the pre-COVID level, quickly. Have we understood it right, that you want to come there by, say, August? No, broadly, you are right to the extent that RBI wants to would like to raise the rates in the next few meetings, or in the next meeting at least. I myself have said in my minutes that we did one of the reasons for the off-cycle meeting in May was that we did not want a much stronger action in June, which is highly avoidable. You cannot be cutting rates at at 75 or 100 basis points or 80 basis points, something like that. Now, these numbers which I am mentioning, 75, 100 or 80, are random numbers. Please don't interpret the number which will be there for the next MPC. You said pre-COVID, and that's why this 5.15 is... Pre-COVID, I said in a larger context of liquidity as well as interest rates. If you read my minutes carefully, when we say pre-COVID, we are talking about growth in terms of pre-COVID levels. We are talking about liquidity in terms of pre-COVID levels. We are also talking about the rates in terms of pre-COVID levels. So, expectation of rate hike
is it's a no-brainer. Okay. There will be some increase in, in the repo rates. Okay. But by how much, I will not be able to tell now. Okay. But to say that 5.15 may not be very accurate. Okay. Liquidity also, you just mentioned, you want to come back to pre-COVID levels. Now, the pre-COVID liquidity level as of, say, February or January 2020 was 2.5 lakh crores surplus liquidity. Also, the Currency and Finance report says that above 2.5 lakh crore of liquidity, inflation starts rising. So is that also something you want to get to quickly, 2.5 lakh crore? No, I will explain. We have said that we will normalize liquidity conditions over a multi-year time cycle. And during the press conference, I said the multi-year could be 2 years or it could be 3 years. Now, to what extent and how we are going to sort of bring down the liquidity will depend on the evolving growth inflation dynamics. That is part of the strategy. Second thing is the requirement of liquidity or the adequacy of liquidity in 2019-20 will be different from the adequacy of liquidity in the current year, because the economy is also growing. Business activities are now rebounding. So therefore, that will be a moving figure. Our position on liquidity is that we would like to normalize the liquidity, remove the overhang of liquidity in the system, and move to a situation where there is adequate credit available in the system to meet the productive requirements of the economy and to support the credit offtake which will happen. And also, mind you, when credit offtake takes place, part of the liquidity also gets absorbed by that. Yes. So therefore, our target is to eliminate the overhang of liquidity over a time period of 2 to 3 years, and at the same time ensure adequate liquidity for the system. Yes, we are probably, the likelihood is that for 3 quarters we are not going below 6%. It will be above 6%. So, that is why the market would want to know how you are looking at rates. One of the members of the Monetary Policy Council did speak about the need to get to positive real rates, or at least zero real rates. We are now deeply negative. At 4.4 and inflation running well over 7, we are deeply negative. So do you also think of the need to return to positive or at least zero real rates? You see, if you please give me a little time, because inflation is the major area of concern today, major area of interest for everybody in the country. So just give me a little time to explain it. And I'll take a little more time than perhaps normal. Sure. 2 facts I would like to mention in the beginning. Number one, the interest rates in almost every country today, they are negative, except perhaps Russia and Brazil. Other than that, the interest rates, you take any advanced economy, you take any other economy, they are all negative, in the negative territory. Second thing is that with regard to inflation, the target for the advanced economies, for example, is 2%. USA is at 8.3%. United Kingdom is at 9%. Euro area is more than 7%. And if I remember, China is about 5%, more than 5%, 5.5% or 5.6%. I think excepting Japan and one more country, all of them are, in excess of 7%. In India, our target is 4%, and we have a tolerance band which goes up to 6%. We are 7.8%. There are analysts in the market who say that we have reached the peak. I won't like to comment on that, because it will again depend on so many other factors, including the action which the central bank is taking and the government is taking. If you allow me just a little more time, and I think that will perhaps preempt many of the questions which you will have. You see, look at the inflation mandate target which has been given to RBI in the Reserve Bank of India Act. It's a dual target. It says to maintain price stability, keeping in mind the objective of growth. Price stability is 4% plus minus 2% on either side, keeping in mind the objective of growth. So when we experienced the deepest contraction in our economy in the first quarter of 2020, when COVID set in, we were minus 24%. And the economy that year was minus 6.6%. This year's final number, 21-22 final number will come on 31st. But
we have a sense that the economy has revived. It has exceeded, howsoever moderately, it has exceeded the pre-pandemic level, and it has exceeded, the 1920 levels. Private consumption has now become, entered into positive territory. Private investment is also showing signs of improvement. So therefore, our primary target at that time was to focus on growth and bring back inflation to, to sort of tolerate inflation up to 6%. Intermittently during this period, inflation spiked to 6% and above. I think on one or two occasions it even touched 7%. But last year, I was looking at the numbers. Last year, the inflation almost came down to 4% on multiple occasions. And if I remember correctly, it was in January, then again it happened around April, and again perhaps in September and October. It came down to 4%. And the sense that we were getting, and in fact in last year in August, we stopped calling it stopped calling it due to transitory factors. Yes. Supply side factors remain even dominant for the current inflation, but we stopped calling it transitory because we had concluded that it's not going to be so transitory. Now, when we entered this calendar year, in fact, this question has been asked, and I thought I'll take this opportunity to clarify this, for wider understanding. Questions have been asked, and I referred to it earlier, that February was, our MPC projection of an inflation was too optimistic. I'll tell you why we did, 4.5%. The momentum of inflation, month to month or month on month, from October onwards, was moderating. The food price inflation was moderating. And it appeared that once these supply chain bottlenecks, they start easing with the easing of COVID, the supply side factors will ease themselves. Even in February, we had done our stress tests, we had done our scenario analysis, and we found that even with a margin of error of 50 basis points, we will be at 5%. We had assumed oil prices, crude oil prices, little below $100, and that gave us inflation of around 5%. So we were fairly comfortable, and it looked, the future, the roadmap for the future was that the inflation will moderate. But then the war started in February, and in February, on February 24th, and then everything changed. So in April, when we had our MPC, I'm sorry I'm taking a little long, but I will explain. In April, when we had MPC, we took several decisive actions. We changed the sequence of our priority. We put inflation first, growth next. We reduced, we again normalized our LAF corridor. We changed our stance, saying that we are, focusing on withdrawal of accommodation, and there was a rate action. The rate action was that, what was the reverse repo. The SDF. We introduced the SDF, and that was more, against 3.35 reverse repo, the SDF was 3.75, and that was a 40 basis point increase. Now, this 40 basis point increase in the liquidity absorption rate, it resulted in the overnight call rates immediately going up by 40 basis points. So there was a rate action. I think this is a point which market and everyone should take note, that there was a rate action in the month of April, which I think many people seem to have lost out. So this question that why sudden meeting and all that, it was not sudden. In April, we did a rate action of 40 basis points, and the overnight rates went up by 40 basis points. And then after the April, print, several developments took place. For example, the FAO and the World Bank, they came out with their food price index, and it appeared that it became very clear that food price inflation is here to stay. And what is more important, in my statement, MPC statement, not in the minutes which comes out after 15 days, in the statement which I read out, I said that the situation is fast changing and dynamic, and our actions will be tailored accordingly. I think many of you read it right, but I don't know, on May
Fourth, when we announced the, the off-cycle meeting, why you forgot about that particular bit in my statement? Okay. And I'll stop here. You were speaking about the actions the central government has also taken. Now that also means a rise in fiscal deficit and possibly market borrowing. You think so, that the government will have to borrow more, because it looks like tax revenues have been given away to the extent of about 3 trillion rupees. Now, government's thinking, I cannot speak obviously on behalf of the government, but having worked in the finance ministry for sufficiently long period of time, let me say that there is no one-to-one correlation between increase in government expenditure under one head and the need for additional borrowing. These are all figures which keep moving throughout the year. As we move, in more and more into the year, please remember that we are only in the month of May. Yes. It's the second month of the current financial year. In certain heads, the expenditure requirements go up. In certain heads, the expenditure requirements or the absorption capacity can go down. Revenue also, the same thing can happen. The revenue can show greater buoyancy, and in fact, the revenue figures currently, or going by the recent experience, the GST or the direct taxes, they look very robust. Now, my sense is that the government remains committed. Again, I cannot really speak to on behalf of the government, but my sense is that the government will maintain the fiscal deficit target given in the budget. Okay. And how they will do it, I will not be able to answer, but the sense I have in my several discussions, and it's a continuous process between the Reserve Bank and the governments, I mean, many issues are discussed. Yeah. So I can say that the government would be sort of committed to maintaining the fiscal deficit. But overall, is there a worry about the twin deficits deteriorating? I mean, it's quite possible that deficit is beyond 6.4 by a smidge. Maybe we will be saved because the nominal GDP is likely to be high because of high inflation. But nevertheless, fiscal deficit is not improving. Likewise, current account deficit is likely to be 3% or more, and we are now actually discouraging exports in items like steel. So is that a worry, the macros worsening? No, I think discouraging exports would be a very strong statement. Macros worsening, sir. So, yeah. Now, on fiscal deficit, I have said that my sense is government will maintain the fiscal deficit. So far as current account deficit, which is in our domain, let me say that the current account deficit, we will be able to manage very well, very comfortably this year. Our India's external sector remains strong. Yes. The exports, I think for the 14th successive month, it is, it is more than 30 billion, more than $30 billion. And the latest number was very high. Also. Yeah, it's March was 40 billion. Yeah, is it March was 40 billion. So the export sector continues to be very strong. Imports have also picked up incidentally, sir. And increased imports is reflective of the strength of the underlying fundamentals of the economy, in the sense that there is a demand pickup. Even at higher prices, the import is still sustaining, which means that domestic demand is reviving. I hope I have made the position very clear. Yes, absolutely. So domestic demand is reviving, and the imports are going on, despite high prices. So therefore, revival of domestic demand, that's a very positive trend. We have the IIP numbers, both services and manufacturing. They are in expansion territory. In fact, this month's number, the April number were more than the previous number. Monsoon has already hit the Andaman Islands, and I think anytime soon it will hit the Indian coast, Kerala, and then slowly move. So monsoon is looking good. Agriculture is looking good. Food stocks, on which there is so much of discussion, I think the rice stocks are 4 times the buffer, and the wheat stocks, if I remember correctly, are about 1.8 times the buffer level. So therefore, India is comfortably placed to deal with the domestic fundamentals of the economy are good, and external sector remains strong. The FDI inflows are steady. FDI inflows are steady, and despite some moderation, I think, in the recent months. So
given this kind of underlying fundamentals and the fact that our external sector is strong and our total external liabilities, external debt is only about 20 or 21%, I don't expect a very big jump in our current account deficit. Whatever is the number eventually, that we will know at the end of the year, but we are in a comfortable position, we are comfortably placed to finance the current account deficit. Actually, sir, we have not hit $20 billion trade deficit every month since September in a very long time. I mean, now it looks like 20 billion is a given trade deficit per month. That will be $240 billion in a year. And even if we take 100 billion in terms of other services and software payments, we are heading towards probably a 100 billion current account deficit. And, you know, on the capital account, FII outflows are fairly serious. So there is almost every economist on the street is expecting a balance of payments deficit. So is rupee a worry at all? No, there will be a current account deficit, obviously. No, balance of payments deficit. Balance of payment, I don't think we will have that kind of situation. I mean, it will be sort of, situation is constantly changing. Exports rupee is not a worry for you? No, exports are picking up. Exports are picking up. The underlying fundamentals of the week are very strong. You are right that the current account deficit, you know, in the last few months have touched 20 billion and all that. But I think as we, you know, go into the, you know, as we proceed, even at the level which you are mentioning 120 billion dollars, I think we will be able to comfortably finance that. Okay. And so far as the worry around rupee, let me clarify one point, that our stated position is to prevent excessive volatility, and we will continue to do that. We will not allow, obviously, a runaway kind of depreciation of the rupee at a rapid pace. The rupee will find its level. We have no specific target of exchange rate in our mind, and I'm not saying anything new. This is the RBI. So people were talking about 77.50 as. This is I mean, people can say anything, but I am telling you on behalf of it was traced to the RBI. No, I'm telling you no. I'm telling you on behalf of the RBI. So, I mean, you can treat me as the horse. Yes, so, of course. I'm telling you that we have no specific level in our mind. The rupee is market determined, but we will prevent excessive volatility. We will not allow a runaway sort of depreciation of the rupee. The rupee will find its level. And with regard to, you know, concerns expressed by some in some sections that the reserves are depleting. Yeah. Now, please look, why do we build reserves? Exactly. We build reserves for dealing with situations of stress as we are currently facing. Our reserves 3 years ago were less than 400 billion. Yes. We touched 640. Now we are back, you know, a little below 600. And this $40 billion which has gone, you know, which has depleted, it's not as if we have sold $40 billion to keep the rupee where it is. It's a part of it, a good part of it, let me say, is due to revaluation of reserves. Because as your rupee depreciates, as the dollar appreciated, the dollar appreciates, due to revaluation of reserves. So it is both RBI intervention and RBI's, you know, the revaluation of reserves and our intervention in the market. Again, I'm not sharing a state secret. Our intervention in the market is multi-pronged. Yes. To minimize the actual outflow of dollars. And let me leave it at that. Okay. Now, when you raise rates, all the banks are on external benchmarks. So the rate hikes will pass very swiftly. Do you worry that there can be NPAs? I think the Currency and Finance report even worried about it. A series of rate hikes suddenly, quickly, in say half the time will... You see, the NPA, the GNPA, the gross NPA remains at an all-time, if I can now say, it is comfortable. 6.5%. And you mentioned about the retail. The Currency and Finance report was basically saying that this is an area which has to be watched. Which has to be watched because it depends on, you know, it depends on, again, so many factors, how the salaries of people are coming, the EMIs and other payments. So it was more of a kind of a signal that you must watch it. And when the Currency and Finance report was prepared, the number that was available at that time, the total retail GNPA, you know, the NPA levels in the retail portfolio
of all the banks put together at the aggregate level had exceeded 2%. But subsequently, the provisional data we have for the subsequent period, it has come back to about 1.8% or little below 2%. So even at 2%, you know, it is not something one has to be very worried about. Basically, the idea is that this can become a problem and calls for greater watchfulness and greater focus on following up the collection, you know, just to watch just that now and also on the, sorry to intervene, and also on the banking sector, as I said, it is 6.5% is the overall GNPA. I have had my meetings with last week I have had my meetings with the both public and private sector banks. We have discussed, the banks have been sensitized, and in fact the banks are fully sensitive to the need to monitor the NPA levels very closely. The collection efficiencies have improved in almost all the banks and they are almost at 100%. Collection efficiencies have improved. Banks have raised substantial amount of capital during the period of COVID. Going forward also, various banks have their capital raising programs. And you asked one more question, whether the rate hike will, you know, have a dampening effect on the credit offtake. Credit offtake depends on a multiplicity of factors. It depends on how well the economy is doing, how the private consumption, private demand is picking up. So it's a complex set of factors, and with the underlying fundamentals of the economy now where it is, and with growth showing very clear signs of revival, IIP numbers all that I mentioned, despite the COVID and the war on top of the COVID, I think bank credit offtake should remain steady. The latest number I have, I think this is the number as on May 6th or 7th, bank credit growth is about 11% year on year. Yes, sir. No, 11.1. And it's more than double of last year. Okay. Just the last word on cryptos, sir. The regulation has not come. It is kind of, you know, in between everything. And then we had this Coinbase CEO saying that, you know, RBI discouraged us from using the UPI. Where do you stand? Will that regulation come? When is the law due? When will people have clarity on where do we stand in cryptos? You see, speculative observations made by individuals outside, I would not like to react on that. And with regard to crypto, we have been cautioning on crypto, and look at what has happened to the crypto market. Now, had we been regulating it, or any other regulator being, then the markets have crashed, and you know, obviously people would be raising question, what happened to regulation? So therefore, this is something whose underlying is nothing, a product whose underlying is nothing. There are big questions, how do you regulate it? On cryptos, our position remains very clear. It will seriously undermine the monetary and financial and the macroeconomic stability of India, and we stick to that position. We have conveyed our position to the government, and government will take a considered call. And I think the utterances, you know, the statements coming out from government are more or less in sync with, you know, they are also equally concerned. Cautious, yes, absolutely. Governor, you've given me more time than I would have hoped for. Thank you very much indeed for this many-sided conversation on the macroeconomy. Thank you, and thank you to your viewers. Thank you. हिंदी, उर्दू, पंजाबी, भोजपुरी में जीनियस। अच्छा, शहर कौन सा? सही सवाल, गलत जगह। सही जगह है ग्लोब कैपिटल, जहां पर आपको मिलेंगे अवार्ड विनिंग रिसर्च बेस्ड आइडियाज, अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करने की सुविधा। ग्लोब कैपिटल, मनी मस्ट ग्रो। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। Volkswagen। भैया, सूरज ढला नहीं कि आधा देश अंधेरे में डूब गया। आप भी मेरे साथ अमेरिका क्यों नहीं चलते? बेटा, मेरे पाँव तो इस जमीन से जुड़े हैं। तो बढ़, आगे बढ़, हम उसी से रोशन हैं। Let's begin। ये पावर है बढ़ते कदमों की। हर देश ये टेक्नोलॉजी खरीदना चाहेगा,
किसे देना पसंद करोगे? जिसका पहला हक बनता है भैया, जो कदम इस जमीन से जुड़े रहे, अब वही करेंगे इस देश को रोशन। कुछ कर ऐसा, दुनिया बनना चाहे तेरे जैसा। रजनीगंधा Presenting Steris Healthcare Private Limited. Steris, quality that you can trust. आज का इंडिया नई निगाहों से सब देख रहा है और ये मुमकिन कर रहा है स्नैपड्रैगन। Unleash your dreams. Unleash the best smartphone experiences with Snapdragon. तूफानी बारिश, क्रैक जीरो मतलब नैरोलैक हीरो। जापानीज टेक्नोलॉजी वाला पेंट प्लस है। नेरोलैक एक्सेल माइका मार्बल स्ट्रेच एंड शील, इसकी 2 गुना स्ट्रेच रखी वॉल्स को क्रैक फ्री सालों साल। sama pina ay crack only. तो अभी आपने सुना रिजर्व बैंक के गवर्नर साहब ने बिल्कुल स्पष्ट तौर पे अपनी बातें रखी और हमें ये बताया कि सरकार ने जो कदम उठाए हैं उनका क्या असर हो सकता है, और उनका मानना है कि इससे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में काफ़ी मदद मिलेगी। 4 बातें उन्होंने जो मुख्य तौर पे कही वो आपके साथ समराइज करूँ, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। एक, उन्होंने कहा कि महंगाई कंट्रोल में रहेगी, उनको पूरी उम्मीद है और रियलिस्टिक जो एक्सपेक्टेशंस हैं, जो एस्टिमेट्स हैं, वो जून वाली पॉलिसी के समय MPC के सामने सब रखेंगे। दूसरा, उनका मानना है कि ब्याज दरें डेफिनेटली बढ़ेंगी और इतना ज़्यादा नहीं बढ़ेंगी जिसको लोग कह रहे हैं फ्रंट लोडिंग करेंगे, बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे, लेकिन बढ़ेंगी और वो जून वाली पॉलिसी स्टेटमेंट के साथ ही बढ़ना शुरू हो जाएगी। तीसरी बात उन्होंने कही कि इकॉनमी बिल्कुल रास्ते पे है, मॉनसून ठीक है, फूड ग्रेन्स के स्टॉक्स बहुत सारे हैं, FDI आ रही है, ग्रोथ पटरी पे है। और उन्होंने कहा कि डोमेस्टिक डिमांड में रिवाइवल साफ देखने को मिल रहा है, क्रेडिट ग्रोथ YOY 11% के आसपास चल गई है और रुपए को बहुत ज़्यादा वीक नहीं होने देंगे जैसा कि दिख रहा है और लोगों को इस बात की चिंता है। तो इस मद्देनज़र सरकार ने जो कदम उठाए हैं उसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ जो बातचीत करने के मेहमान हैं उनसे परिचय करा दूँ आपका। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस के DG CEO अजय सहाय जी हमारे साथ होंगे। इंडियन स्टील एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल आलोक सहाय जी हमारे साथ हैं। क्रिसिल के चीफ इकोनॉमिस्ट DK जोशी सर हैं और साथ ही पाइपर सेरिका के फाउंडर अभय अग्रवाल है। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जोशी सर, आपने सुना कि गवर्नर साहब बहुत कॉन्फिडेंट साउंड कर रहे थे और उन्होंने उन तमाम मुद्दों पे अपनी बात रखी। आपको लगता है कि जो कदम सरकार ने उठाए हैं वो और जो RBI प्रयास कर रहा है उससे इन्फ्लेशन कंट्रोल करने में मदद मिलेगी? देखिए, हमारा फोरकास्ट इन्फ्लेशन का 6.3% है इस फिस्कल के लिए। उसमें रिस्क अभी भी ऊपर की तरफ बना हुआ है। जो सरकार ने कदम उठाए हैं ये उचित थे, इससे जो अपसाइड थी इन्फ्लेशन को वो अब कम हो जाएगी। हम जिस तरह का पाथ देख रहे हैं, फर्स्ट हाफ में 7% इन्फ्लेशन और सेकेंड हाफ में ये नीचे आ जाएगी और फोर्थ क्वार्टर तक ये 6% से नीचे आने की उम्मीद है। अभी ये हमारा असेसमेंट है। और इसमें एक बात ये भी देखने वाली है कि जो इन्फ्लेशन का जो शॉक है ये डिमांड से कम है और सप्लाई शॉक ज्यादा है और इसमें इंपोर्टेड कंपोनेंट बहुत ज्यादा है। टिपिकली जो इंपोर्ट्स का कंट्रीब्यूशन 28% रहता है WPI इन्फ्लेशन को, इस बार ही ये 21-22 में करीब 61% था। तो काफी हद तक इन्फ्लेशन कहाँ जाती है इस पे भी निर्भर करेगा कि जो ग्लोबल फैक्टर्स हैं वो कैसे प्ले आउट करते हैं और उनमें अभी ग्लोबल स्लोडाउन की बात चल रही है, तो धीरे धीरे शायद कमोडिटी और क्रूड प्रेशर्स जो है सेकेंड हाफ तक वो कम होते नजर आएंगे। डिमांड का रोल इसमें ज्यादा नहीं है, पर कुछ जो प्रीमियम आइटम्स हैं उनमें पास थ्रू बहुत तेज है। सर्विसेज सेक्टर रिबाउंड कर रहा है तो उसमें महंगाई की दर बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो ये डायनेमिक्स इस साल प्ले आउट करेंगे। जहां तक ग्रोथ का सवाल है, इस साल जो मेजर सपोर्ट ग्रोथ को है वो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड सर्विसेज से, और दूसरा अगर मॉनसून नॉर्मल रहता है और वेदर रिलेटेड ज्यादा डिस्टर्बेंस नहीं होती है तो एग्रीकल्चर भी उसको ग्रोथ को सपोर्ट करेगा। तो ये आई थिंक पर जो प्राइवेट कंजम्पशन डिमांड है वो अभी भी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है और खासकर जो लोअर इनकम ब्रैकेट्स हैं उनको इन्फ्लेशन की मार अवश्य पड़ रही है। ये इन्फ्लेशन परचेजिंग पावर को डिस्ट्रॉय करता है, चाहे ये कंज्यूमर की हो, और अगर इंडस्ट्री की बात करें तो उनके लिए मार्जिन स्क्वीज पैदा करता है। तो ये सब फैक्टर्स जरूर प्ले आउट होंगे और अगर इन्फ्लेशन जैसा मैंने कहा फोर्थ क्वार्टर तक 6% से नीचे आ जाती तो ये एक तरह से अच्छी खबर होगी। लेकिन एक तरफ जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री हमारी, सरकार की बहुत कोशिशें हैं कि उसको बहुत ऊपर ले जाना है, लेकिन दूसरी तरफ स्टील इंडस्ट्री को बहुत तगड़ा एक शॉकर दिया गया है।
अब पेट्रोल डीजल की कीमतें कम की गई, ये तो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी कह सकते हैं, लोगों को राहत दी गई, ज़रूरी भी था ये। लेकिन दूसरी तरफ स्टील इंडस्ट्री को इतना बड़ा शॉकर दिया गया कि आज आप देखिए स्टॉक्स में ज़बरदस्त गिरावट दिखी है और तमाम लोग ये कह रहे हैं कि इससे तगड़ा नुकसान होगा। आलोक सहाय जी हमारे साथ हैं, इंडियन स्टील एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल। आलोक जी, इतना ज़्यादा आप लोग क्यों निराश है इस कदम से? क्या मुश्किलें खड़ी हो रही हैं आपके सामने? सबसे पहली बात तो ये है कि ये इंडस्ट्री बिल्कुल इसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं थी, एक पहले से कोई बातचीत नहीं हुई थी, तो हम लोगों को ये शॉक तो लगा ही है। और अगर आप देखें पिछले साल जब पैंडेमिक पीक पे थी, तो उस समय अगर सबसे बड़ा कोई राहत दिया ऑक्सीजन का तो स्टील इंडस्ट्री ने दिया, और वो इसलिए हुआ क्योंकि हम लोगों ने एक्सपोर्ट के भरोसे अपने प्लांट्स को चलाया हम लोगों ने, तो ये सबसे बड़ा राहत था। आज के दिन में पिछले साल हम करीब 13 मिलियन टन एक्सपोर्ट किए हैं और एक पूरी सप्लाई चेन बन गई है। यूक्रेन रशिया के बाद एक जो मार्केट में जो जगह खाली हुई है, इंडिया बहुत बड़ा एक रोल प्ले कर रहा था। हमारी प्रोडक्शंस बढ़ने लगी है और डोमेस्टिक डिमांड कम था। इस ऐसे समय में एक्सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप देखें तो पिछले एक महीने में स्टील के प्राइसेस तो घटते ही जा रहे थे और एक्सपोर्ट में भी प्राइसेस घटते जा रहे थे, लेकिन एक एक्सपोर्ट का एक साइकिल बना हुआ था जो मेंटेन कर रही थी हमारी सारी स्टील कंपनीज। तो उसका वो पूरा चेन ब्रेक हो जाएगा इस पूरे प्रोसेस से। तो आलोक जी, करीब 20 लाख टन ऐसा एस्टिमेट बताया गया कि 20 लाख टन स्टील जो है वो अलग अलग स्टेजेस में फंसी हुई है, कोई पोर्ट में, कोई रोड में, कोई बिल्कुल ऑर्डर पे है और वैल्यू टर्म में भी काफ़ी बड़ी है। तो मेरा सवाल ये कि इंडस्ट्री से बिल्कुल भी बात नहीं की गई, एकदम सरप्राइज मूव, कंसिडरिंग ये कि आयरन ओर की कीमतें 36% साल दर साल गिर चुकी हैं और चाइना की तरफ से ऐसी कोई बड़ी डिमांड नहीं आ रही, डिस्पाइट कि वहाँ पे इतने $1 ट्रिलियन का पैकेज भी दिया गया है। फिर ये अचानक से मूव लेने के पीछे आपको क्या मंशा लगती है, जबकि पीयूष गोयल जी ने तो वायदा किया था कि हमको एक्सपोर्ट ही बढ़ाना है? सच्चाई है कि हम लोग सारी कंपनीज मिल करके, चूंकि लगातार हम लोगों पर भी आ रहा था प्रेशर कि भाई आप एक्सपोर्ट बढ़ाएं, तो हम लोगों ने एक ड्राफ्ट वाइट पेपर तैयार किया ताकि कैसे एक्सपोर्ट को आगे बढ़ाया जाए। पिछले महीने डोमेस्टिक डिमांड कम होने के कारण काफ़ी इन्वेंट्री बढ़ गई थी, तो एक्सपोर्ट पे ध्यान देना तो बहुत ज़रूरी था ताकि सारी यूनिट्स हमारी पूरी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन उसका पूरी तरह से चलता रहे। और ये इसके बाद कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बहुत जोर से हिट होगा। मेरा ऐसा मानना है कि एक इन्फ्लेशन तो है, लेकिन उसका कारण स्टील प्राइसेस नहीं था बल्कि कोल प्राइसेस था, और ये चीज हम लोगों ने बार बार लाया है सरकार के सामने। हम लोग बहुत सारी चिट्ठी भी लिखे कि कोल प्राइसेस बढ़ रही है चूंकि इंडेक्सेशन सिस्टम ऐसा है पूरे कोल इंडस्ट्री का, स्पेशली इंपोर्टेड कोल इंडस्ट्री का, जिसको उसको इन्वेस्टिगेट या उसके अंदर जाने की जरूरत थी जी। और तब समझना था कि कोल प्राइसेस क्यों इतना ज्यादा बढ़ रहा है। पिछले एक साल में देखा जाए तो करीब 20,000 रुपया कोयले के कारण दाम कॉस्ट बढ़ गया हमारा, और अगर एक महीना में करीब पिछले 3-4 महीने में देखा जाए तो हमारा कॉस्ट पे ही करीब $200 से $250 बढ़ चुका है हमारा कॉस्ट स्टील बनाने का। तो ये बहुत बढ़ा है इस कारण, न कि हम लोगों ने दाम बढ़ाया है। हाँ, लेकिन कई सारे रियल एस्टेट के लोग ये शिकायत करते थे कि इंटरनेशनली प्राइस गिर रहे हैं, लेकिन फैक्ट्री से जो कीमत निकल रही वो अभी भी 8,000 7,500 टन के आसपास बनी हुई है। दोबारा आता हूँ मैं आपके पास। अजय सहाय जी, आप इस इशू को कैसे टैकल करते हैं, क्योंकि आप भी एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, ये बिल्कुल एक सरप्राइज़ दिया गया, क्या आप लोगों की भी बातचीत नहीं हुई थी और इसके पीछे मंशा क्या है सरकार की? आपने अब तक तो रिएक्शन लिया होगा उनसे। नहीं, देखिए, आई थिंक काफ़ी समय से एमएसएमई इंडस्ट्री डिमांड कर रही थी, जो कि
जिस तरह की प्राइस राइज हो रहा है की इनपुट है, न खाली स्टील को लेके, स्टील के साथ प्लास्टिक, कॉटन सबके लिए, तो एक जनरल ये बात हो रही थी कि किसी तरह का एक बैलेंसिंग करने की जरूरत है जिससे वैल्यू एडेड एक्सपोर्ट्स भी और बाकी एक्सपोर्ट्स भी चलते रहे। तो उस चीज को देखते हुए शायद ये डिसीजन लिया है कि इससे शायद थोड़ी प्राइसेस जो होगी सॉफ्टन अप होंगी और डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी बढ़ेगी और वैल्यू एडेड एक्सपोर्ट्स को इससे जरूर फायदा मिलेगा। जहां तक जिस आइटम्स पे टैरिफ लगाया गया उनका शेयर कंट्रीज के एक्सपोर्ट में करीब 4% है और 11 आइटम जिन पे टैरिफ आया है उनका टोटल एक्सपोर्ट $17 बिलियन का हुआ है, तो काफी साइजेबल एक्सपोर्ट्स है। अब हमें ये देखना होगा कि जो एक्सपोर्ट ड्यूटी लगी है उसके बाद क्या सिनेरियो होता है, बिकॉज मच विल डिपेंड कि डिमांड कितनी है। अगर डिमांड बढ़ती रहती है तो शायद उतना प्राइस डाउन ना हो, लेकिन अगर डिमांड में जो कि लग रहा है चाइना के स्लो होने के बाद थोड़ा डिमांड पे फर्क आया है तो कीमतें थोड़ी गिर सकती हैं। लेकिन एक्सपोर्ट सब हमारे लिए सब एक्सपोर्ट इंपॉर्टेंट है। हम लोग को जरूर एक चीज देखनी होगी कि सिर्फ हम रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट ना करें, हम वैल्यू एडेड एक्सपोर्ट्स भी करें, बिकॉज कंट्री के लिए वैल्यू एडेड एक्सपोर्ट अच्छा होगा। लेकिन ऑफ कोर्स अगर डोमेस्टिक डिमांड नहीं है रॉ मटेरियल की तो डोमेस्टिक वो आइटम एक्सपोर्ट्स होने चाहिए। तो एक लिटिल कैलिब्रेटेड अप्रोच होनी चाहिए, एक बैलेंस्ड अप्रोच होनी चाहिए जिससे कि रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट्स हो। कोई आपकी इस अनाउंसमेंट के बाद आपकी कोई बातचीत हुई या कम से कम ये कर देते कि जितने ऑर्डर हैं उनको ऑनर कर लीजिए उसके बाद से लागू होगा, ऐसा कुछ कम्युनिकेशन आप लोगों को हुआ इस घटना के बाद? डिसीजन सैटरडे को डिसीजन हुआ है। ऑफ कोर्स ये एक बात है, जब भी कोई ऐसा सडन डिसीजन लिया जाता है तो जो ये पाइपलाइंस में ऑर्डर्स हैं या एग्जीक्यूशन में ऑर्डर उनके चैलेंजेस आते हैं। आई थिंक इंडस्ट्री इसके लिए पर रिप्रेजेंट कर रही है और गवर्नमेंट उसको डिस्कस करेगी टू व्हाट एक्सटेंट दे कैन एक्सपेक्ट। टेक्निकली स्पीकिंग हम लोगों ने देखा है कि वीट के केस में गवर्नमेंट ने कुछ रियायतें दी हैं और जरूर इंडस्ट्री ने भी किया है। हम लोग भी चाहेंगे कि जो पाइपलाइन में ऑर्डर्स हैं या ऑर्डर जो कमिटेड हैं उनमें किस तरह का रिलीफ दिया जा सकता है कि वो एक्सपोर्ट्स चलता रहे, बिकॉज ऑफ कोर्स उन इंडस्ट्रीज के लिए भी एक प्रॉब्लम की बात है कि अगर टैरिफ लगने से वो बैकआउट करते ऑर्डर से तो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी के लिए अच्छा नहीं होगा। आलोक जी, अगर मान लीजिए ये ऑर्डर्स आप लोग ऑनर नहीं कर पाते हैं या किसी भी कारण से नहीं होते तो क्या होगा? हमारा खुद का विचार से वही है जो अजय जी ने बताया। पहले भी जब MIP लाया गया था 2016 में, उस समय भी जो भी कमिटमेंट्स थे इंपोर्टर्स के वो सारे कमिटमेंट्स को सरकार ने ऑनर किया था और अभी वीट के केस में भी वही हुआ है। तो मैं तो ये उम्मीद रखता हूं और हम लोगों ने रिक्वेस्ट भी किया है और सरकार, मुझे लगता है सरकार एक्सपेक्ट करते हैं सरकार इस पे कंसीडर करे। मैं कह रहा हूँ कि नहीं हो पाए उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? मान लीजिए आप नहीं सप्लाई दे पा रहे तो क्या होगा? आर्बिट्रेशन में हो जाएगा? क्या होगा? बहुत ये देश का, बिकॉज ये तो हमारे कंट्रोल के बाहर है। अगर 15% ड्यूटी लग गई तो फेलियर्स तो होंगे हमारे तरफ से एक्सपोर्ट के, उसमें काफी नाम खराब होगा, देश का नाम खराब होगा। तो हमें उम्मीद है कि ये रियायत दी जाएगी। जी अभय अग्रवाल जी, ये सारे कदम जो उठाए गए मार्केट को इससे खुश होना चाहिए था और खुश भी हुआ वो, लेकिन शाम होते होते वो खुशी जो है काफूर हो गई। क्यों? अब नीरज जी आप भी देखते हैं 2 बजे कुछ ऐसा बदलाव आ जाता है। ये 2 बजे कौन लोग हैं जो आते हैं रोज 2 PM गेस्ट? ये जरा समझना पड़ेगा कि 2 और 3:30 के बीच में क्या होता है। पर नीरज जी आपका जो सवाल है इसमें इसके पहले आज लता जी ने इंटरव्यू किया RBI गवर्नर का, और जब पिछली जो आउट ऑफ टर्न MPC अनाउंसमेंट किया उन्होंने रेट हाइक का, और फिर गवर्नमेंट का भी कैलिब्रेटेड एफर्ट क्लियरली दिख रहा है कि इन्फ्लेशन को कम करना है। सारा ध्यान सरकार का यही है कि अभी ग्रोथ थोड़ा बैक सीट भी ले ले तो चलेगा, इन्फ्लेशन को बढ़ने नहीं देना है। तो मुझे लगता है कि, और आज भी RBI गवर्नर ने कहा कि जो रेपो रेट है वो प्री कोविड लेवल तक चला जाएगा जल्दी, तो 5.25% तक का उम्मीद कर रहे हैं, 5.15% का। तो पूरा गवर्नमेंट का बहुत ही क्लियर डायरेक्शन है कि देखिए जहां जहां पे एक्स्ट्रा प्रॉफिट बन रहा है उसको हम कम करेंगे, जहां जहां पे हम रेट कम कर सकते हैं विदाउट डिस्ट्रॉइंग द इंडस्ट्री वो हम करेंगे। और आप ग्लोबली भी देखें तो एक बड़ा मोमेंटम है विंडफॉल टैक्स का। यूके में भी डिबेट चल रही है कि जो कंपनीज हैं, सेक्टर्स हैं
जो कि एक्सटेंडेड कमोडिटी साइकिल की वजह से विंडफॉल इनकम बना रहे हैं, उनको एक्स्ट्रा टैक्स करके और इन्फ्लेशन को कम किया जाए। तो ये जो आज हुआ है, एक तो मुझे नहीं लगता ये परमानेंट एक्शन है। अगर रेट इन्फ्लेशन कम हो जाता है तो मुझे नहीं लगता कि ये एक्सपोर्ट ड्यूटी जो है और ये जो बाकी कदम सरकार ने उठाए हैं वो हमेशा के लिए रहेंगे। मुझे लगता है उनको भी चाहिए कि एक्सपोर्ट कम ना हो, तो ये वापस रिवर्स हो जाएगा। पर ये कब तक होगा? ये तभी होगा जैसे आरबीआई गवर्नर ने कहा कि जून तक देखेंगे और उसके बाद अक्टूबर तक देखेंगे कि महंगाई की दर कितनी होती है और उसी हिसाब से फिर अगले कदम बोलेंगे। तो मार्केट उसी चीज़ को डाइजेस्ट कर रहा है, ये मार्केट कुछ और देख रहा है, उसको फर्क नहीं पड़ता यार डोमेस्टिक फ्रंट पे जो भी स्टेप लिए जा रहे हैं? इस मार्केट में तो अभी ये मूड है कि कुछ भी अगर बैड न्यूज आए तो उसको एग्जैजरेट करके और जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है उनको मुझे लगता है इस टाइम पे बहाना चाहिए। तो जो भी तो क्या इसको बैड न्यूज की तरह लिया क्या उन लोगों ने? स्टील सेक्टर के लिए तो बैड न्यूज की तरह ही ले लिया। तो आप देखें मेटल्स में जो भी आज गिरावट आई इतनी और आ ही रही थी, तो ये तो और भी जो किसी को चाहिए था बहाना बेचने का उसको आज मिल गया। तो आपकी बात ठीक है, मतलब ग्लोबल मार्केट में भी रिकवरी है, अभी फ्लैटनेस है, देख रहे हैं फ्लोज भी आ रहे हैं, पर फिर भी मार्केट जो है सुबह अच्छा खुलता है और दोपहर तक बिकवाली चालू हो जाती है। तो अब जी ये तो मतलब हम और आप सभी देख देख के हैरान हो जाते हैं, और पर ये कब तक होगा वो कहना बड़ा मुश्किल है। जोशी सर, जो भी कदम उठाए गए, मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा रिफ्रेश करके आपके सामने रख रहा हूँ। देखिए, हम लोगों को ये बताया गया और हम जानते भी कि डिमांड में बहुत दिक्कत नहीं थी भारत में, डिमांड इंटैक्ट थी जितनी भी थी। और ये जो कदम उठाए गए हैं, ये इससे डिमांड को पुश मिलेगा। इन्फ्लेशनरी कदम है ये, क्योंकि दाम कम किए जा रहे हैं। रियल एस्टेट वाले कहते थे कि स्टील बहुत महंगी है, तो वो सस्ती, सीमेंट सस्ती। आज बांगड़ साहब आए थे श्री सीमेंट के, उन्होंने कहा कि हम 5 से 10 रुपये बोरी सस्ता कर रहे हैं। तुरंत उन्होंने उसको पास ऑन किया। तो ये आपको इन्फ्लेशनरी कदम नहीं लगते? फिर कैसे ये महंगाई रुकेगी? नहीं, देखिए, महंगाई इससे जो शॉक है वो बेसिकली सप्लाई साइड शॉक है। तो अभी मतलब रॉ मटेरियल्स, इनपुट कॉस्ट, होलसेल प्राइस इंडेक्स है जो 15% में चल रहा है, वो बेसिकली आपका इनपुट कॉस्ट इंक्रीज है, उसको कम करने की जरूरत कर रहे हैं। अभी वो सारा पास ऑन नहीं हुआ है कंज्यूमर प्राइसेस में। तो अगर होलसेल प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन को थोड़ा काबू में लाएंगे तो कंपनीज पे कम प्रेशर रहेगा आगे पास ऑन करने का। तो मुझे तो, और ये फिस्कल पॉलिसी जो है इसके लिए ज्यादा उत्तम है। मॉनेटरी पॉलिसी ना फ्यूल का दाम कम कर सकती है, ना फूड इन्फ्लेशन को नीचे ला सकती है, वो सिर्फ उसका ट्रांसमिशन जो है कोर इन्फ्लेशन को उसको रोक सकती है। तो ये आई थिंक कदम जो सरकार ने उठाए हैं ये बिल्कुल इस समय आवश्यक थे, उचित थे। ट्रेड ऑफ अवश्य है, सरकार का रेवेन्यू लॉस हो रहा है, पर इस समय इन्फ्लेशन सबसे बड़ा मुद्दा है, तो इसलिए सबसे पहले उसको काबू में लाने की जरूरत है। बाकी चीजें फिर जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, अगर महंगाई काबू में आती है तो कुछ रिलैक्सेशन भी हो सकता है, पर अगर नहीं आती है तो टाइटन भी हो सकता है फर्दर। जैसे संतुलन कैसे बनेगा? पहले कहा जाता था कि ग्रोथ हर कीमत पे लानी है, अब इन्फ्लेशन हर कीमत पे रोकना है, तो इसके बीच का रास्ता क्या हुआ? बीच का रास्ता यही है कि आप, मतलब जो गवर्नर साहब ने कहा कि हम इंटरेस्ट रेट बढ़ना है, ये तो लाजमी है, इसमें कोई शक नहीं है। कितना बढ़ेगा ये वक्त बताएगा। उसके साथ साथ वो ये भी लिक्विडिटी भी निकाल रहे हैं सिस्टम से, पर वो उसको इतना मॉनेटरी पॉलिसी को टाइटन नहीं करना चाहते हैं उस सेंस में कि जिनको प्रोडक्टिव कैपिटल का नुकसान हो। तो मॉनेटरी पॉलिसी को बड़ा केयरफुली ये मैनेज करना पड़ेगा कि प्रोडक्टिव कैपिटल जो है वो अवेलेबल हो। जहां तक फिस्कल पॉलिसी का सवाल है, उनके पास एक ऑप्शन ये थी कि जो ओवरऑल प्राइस है उसको नीचे लाएं, कोशिश करें इन्फ्लेशन को नीचे लाने की। दूसरा कदम उनको ये उठा रही है सरकार, ये है कि आप सब्सिडी बिल बढ़ाइए, क्योंकि एक तो फूड इन्फ्लेशन गरीबों को सबसे ज्यादा मारती है, तो इसलिए आपको फूड सब्सिडी देने की आवश्यकता होगी। फर्टिलाइजर बड़ा इंपॉर्टेंट इनपुट है एग्रीकल्चर के लिए, तो फर्टिलाइजर के जो ग्लोबल प्राइसेस बढ़े हैं उससे आपको डोमेस्टिक फार्मर को शील करना पड़ेगा, सब्सिडी बिल बढ़ेगा। तो ये मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच चल रही है। ये सिस्टम को एक मीडियम ट्रेड ऑफ जो है ना, एक्सट्रीम। मोटे तौर पे जोशी जी ये कह सकते हैं कि अभी भी हेजी पिक्चर है, मल्टी प्रोंज स्ट्रेटजी के तौर पे क्लियरली कुछ नहीं कहा जा सकता। मुझे एक लाइन का जवाब आपसे और चाहिए, क्या अभी बचे हुए इस साल में 1% ब्याज और बढ़ेगा? देखिए, हमारा मानना है कि 75 to 100 बेसिस पॉइंट और बढ़ सकता है, और वो पहले उसकी फ्रंट लोडिंग की आवश्यकता इसलिए क्योंकि इन्फ्लेशन ने सरप्राइज किया है।
बाद में इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का कोई फायदा नहीं होगा, अभी बढ़ाने से कुछ बेनिफिट मिलेगा। लेकिन गवर्नर साहब कह रहे हैं फ्रंट लोडिंग नहीं करेंगे, धीरे धीरे करेंगे। फ्रंट लोडिंग तो हो चुकी है ना, 40 बेसिस पॉइंट फ्रंट लोडिंग। सर ये 40 वाला तो पता ही नहीं चल रहा है, 100 रुपए किलो टमाटर बिक रहा है, फ्रंट लोडिंग का तो अभी कुछ खास असर हुआ नहीं। सर आलोक सहाय जी, एक चीज़ मैं आपसे समझना चाहता हूँ, आपकी इंडस्ट्री में जो है ठीक है एक शॉकर के तौर पे था, लेकिन आयरन ओर की कीमतें काफ़ी गिरी हैं, डिमांड भी उस तरीके से नहीं बढ़ी जिस तरीके से हम लोग एक्सपेक्ट करते थे, खासतौर पे चाइना के रेस्पेक्ट में मैं कहूँ। एक कोल का आप कह सकते हैं, तो अभी उन्होंने पेटकोक वगैरह पे ड्यूटी घटा भी दी ना, तो ये न्यूट्रलाइज नहीं हो जाएगा, 1-2 महीने का शॉकर हो सकता है आप ले। हमने बताया कि प्राइस कोल की आज 1 टन स्टील बनाने में करीब 32 से 33 हजार रुपया सिर्फ कोयला का दाम लग रहा है। कोयला का खर्चा 32 से 33 हजार, डिपेंड करता है कि हर का अलग अलग कोल कंजम्पशन है, लेकिन ये करीब 30 से 32 हजार 33 हजार तक ये कोयला का खर्चा लग रहा है 1 टन स्टील बनाने में। और अगर स्टील का दाम, उसके अलावे बिजली है, उसके अलावे फेरो एलॉयज है, फ्लक्स है, सारे तरह का खर्चा है, और मैं लेबर कॉस्ट हटा दे रहा हूं, अगर ये सब देखा जाए तो मतलब स्टील बनाने में ही काफी खर्चा बढ़ गया है पहले के कंपैरिजन में, और इसके कारण दाम बढ़ा है, ना कि और ग्लोबल प्राइसेस भी बढ़े हैं इस कारण। और ग्लोबल प्राइसेस से आप अलग प्राइस रख नहीं सकते हैं, लेकिन डोमेस्टिक एरिया में हमेशा ही हमारे जितने प्रोड्यूसर हैं इंडिया में, वो कम दाम रख रहे थे बाहर के एक्सपोर्ट के कंपैरिजन में भी। एक समय में तो 7-8 हजार रुपया इन डोमेस्टिक एरिया में कम दाम था एक्सपोर्ट अर्निंग के कंपैरिजन में, फिर भी लोग डोमेस्टिक में ही ज्यादा पुश कर रहे हैं। अजय जी, प्लान है मिलने का, सरकार के सामने रिप्रेजेंटेशन देने का कि भाई ये बिल्कुल हम हमारा आइडिया यही भी है कि जो ट्रांजिशन की जो प्रॉब्लम है वो एड्रेस की जाए, और ट्रांजिशन की प्रॉब्लम अगर एड्रेस होती है तो उससे स्टील इंडस्ट्री की भी काफी प्रॉब्लम होगी, और हमें लग रहा है जिस तरह डिमांड का इम्पैक्ट आ रहा है शायद प्राइस फर्दर डाउन हो जाए और इंडस्ट्री की कॉम्पिटिटिवनेस बनाए हो। ये एक बहुत डेलिकेट बैलेंसिंग करने की जरूरत है, जिसमें हम एमएसएमईज के इंटरेस्ट को भी कैटर करें और स्टील प्रोड्यूसर्स के भी जो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है उनको देखें। तो आई एम प्रीटी श्योर जब एक तरह सबके व्यूज एक बार गवर्नमेंट के पास जाएंगे तो गवर्नमेंट काफी बैलेंस व्यू लेगी, जिससे कि हर के इंटरेस्ट प्रोटेक्ट रहे। लेकिन हम हमेशा ये बोलना चाहेंगे कि किसी कंट्री के लिए लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट में वैल्यू एडेड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट्स हमें तवज्जो देनी चाहिए, उसके ऊपर हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए, और शायद इस कदम से वो उस डायरेक्शन में हम मूव कर सकें। तो क्या अभी स्टील इंडस्ट्री इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रही क्या? नहीं, हम सोचे क्या जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है जो कह रही कि हमारे पास रॉ मटेरियल बढ़ने से हमारा फिनिश प्रोडक्ट्स, हमारे एक्सपोर्ट्स कम हो रहे हैं, आई थिंक एक बार रॉ मटेरियल प्राइसेस सॉफ्टन होती हैं तो वैल्यू एडेड एक्सपोर्ट्स को ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। बहुत से केसेस में हमने ऐसा भी देखा है कि हमारे रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट्स होते हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम डाउन स्ट्रीम प्रोड्यूसर्स कुछ केसेस में उन्हीं प्रोडक्ट को इंपोर्ट करती है, तो हम अननेसेसरी प्रेशर हमारे लॉजिस्टिक्स पे भी आता है। फ्रेट कॉस्ट हम आउटबाउंड देते हैं, फ्रेट कॉस्ट हम इनबाउंड देते हैं। तो अगर किसी तरह के एक हमारा इस तरह का इकोसिस्टम डेवलप हो जिससे कि हम इंस्टेड ऑफ एक्सपोर्टिंग रॉ मटेरियल, अगर सरप्लस रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन पहले हम वैल्यू एडेड प्रोडक्ट सेगमेंट की अगर डिमांड मीट करने के बाद ये रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करें तो वो कंट्री के लिए ज्यादा लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट में अच्छा रहेगा। ओके, अब सर बाजार की स्थिति आपको अब क्या लगती है? इसलिए मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि कई बार हम लोगों को ऐसा लगता है कि शायद अब यहाँ पे एक बॉटम बन सकता है, FIIs की बिकवाली रुक सकती है, या फिर ये सब जो दुनिया में चल रहा है डेट का एक बबल जैसा बन रहा है, कोट अनकोट कह रहा हूँ मैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी सिस्टम में है और सारे सेंट्रल बैंकर्स उसको सक आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो हम लोग यहाँ छोटे मोटे कोशिश प्रयास कर रहे हैं वो अभी नाकाफ़ी है और ये सिलसिला भी थोड़ा लंबा चल सकता है क्या? नहीं, देखिए जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं उनको मैं काफ़ी उनकी दाद देना चाहूँगा कि इतना करेक्शन देखा उन्होंने, और जो इंडेक्स में करेक्शन दिखता है वो तो फिर भी कम दिखता है, पर सेक्टोरल इंडाइसेस हैं थोड़े वो बहुत ज़्यादा करेक्ट हुए हैं, पर फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ी है और अपना SIPs और STPs और अपना रेगुलर इनफ्लो चालू रखा है। प्रॉब्लम हमें आ रही है जो 8 महीने से FPI सेलिंग हो रही है, और वो FPI सेलिंग
सिर्फ हमारे देश के लिए नहीं हो रही है, कि ऐसा नहीं है कि उनको कोई प्रॉब्लम है इंडिया से, पर वो ग्लोबली हर इमर्जिंग मार्केट में और हर स्पेकुलेटिव एसेट क्लास में हो रही है। आप क्रिप्टो करेंसी देख लीजिए, $3 ट्रिलियन $4 ट्रिलियन की जो उसकी मार्केट कैप थी क्रिप्टो करेंसीज की, अब 1 या 1.5 ट्रिलियन के आसपास आ गई है। तो काफी बड़े जगह से स्पेकुलेटिव पैसा जो है बिकॉज ऑफ लिक्विडिटी अनवाइंडिंग की वजह से वो पैसा निकल गया है और बबल्स काफी ऑलरेडी बस्ट हो गए हैं। मेरा ऐसा मानना है, मैं कोई टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं हूं, पर मेरा ऐसा मानना है कि ये देखते हुए ग्लोबली इस टाइम पे ओवरसोल्ड पोजीशन है, एटलीस्ट इन गुड क्वालिटी इक्विटी एसेट्स, इमर्जिंग मार्केट और डेवलप्ड मार्केट दोनों में। क्योंकि होता क्या है कि जब करेक्शन आता है तो इन्वेस्टर्स पैनिक करके स्पेकुलेटिव स्टॉक्स के साथ क्वालिटी स्टॉक्स भी बेच देते हैं, और यहीं पे मौका भी मिलता है अच्छे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को। तो आई थिंक मार्केट अब उस जोन में है कि जितना बिकना था काफी कुछ उसमें बिकवाली हो गई है, और अब ओवरसोल्ड है क्लियरली। अब ओवरसोल्ड में भी कितना ओवरसोल्ड होगा वो कहना मुश्किल है, पर मैं ये देख रहा हूँ पिछले हफ्ते 10 दिन से कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं वो कंटिन्यूअसली धीरे धीरे अच्छा स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर रहे हैं, मतलब कोई पीछे नहीं हट रहा है। करेक्ट। इस एनालिसिस का एक एनालिसिस ये है, मतलब एक समरी है जो हमने समझा अभी तक बातचीत करके, कि एक चक्रव्यूह तो बन गया है कि ग्रोथ अगर आप बढ़ाने की बहुत कोशिश करते हैं तो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन रोकने की कोशिश करेंगे तो इंडस्ट्री को दिक्कत हो रही है, करेंसी को भी गिरने नहीं देंगे। गवर्नर साहब ने ऐसा कहा कि बहुत ज़्यादा फ्री फॉल होने की सवाल नहीं है, तो अजय साहब को दिक्कत होगी, करेंसी बहुत गिरने नहीं देंगे। तो ये एक ऐसा दुष्चक्र बनता जा रहा है जिससे निकलने में थोड़ा भी समय लगेगा। एक्चुअली बड़ा मुश्किल है सवाल है ये, जो मैं जानने की कोशिश कर रहा था कि कैसे चीज़ें बनेंगी। लेकिन हाँ, जनता को थोड़ी राहत देने के लिए पेट्रोल डीजल की कीमतें कम करी गई हैं। देखते हैं 1-2 महीने में ये कैसे पैन आउट होती है। उसके बाद हम लोग फिर से एक बार बैठेंगे पॉलिसी के आसपास जोशी से, फिर समझेंगे कि ये कैसे हो रही हैं नहीं हो रही हैं, क्योंकि नंबर्स अभी भी ग्लोबली ये बिल्कुल सजेस्ट नहीं कर रहे हैं कि इन्फ्लेशन कूल ऑफ हो रहा है, चाहे यूएस का हो चाहे इंडिया का हो। फिलहाल इसमें इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, धन्यवाद। परफॉर्मर ऑफ द मंथ। सर वो काफी टाइम से मेरा इंक्रीमेंट पेंडिंग है। कहाँ भागे जा रहा है? तो सीढ़ी देख रहे हो? इस सीढ़ी के पहले पड़ाव पे हो अभी तुम, कल टॉप पे होंगे। उस कल का इंतजार करो माय बॉय रोहन। वो कल कभी नहीं आएगा दोस्त। आपकी सही कीमत समझने वाले हमेशा करते हैं सीधी बात, जैसे करता है IIFL फाइनेंस। IIFL गोल्ड लोन, ब्रांच में सोना दो, 5 मिनट में पैसा लो, ज्यादा लोन की रकम, झंझट सबसे कम। IIFL फाइनेंस, सीधी बात। भैया, सूरज ढला नहीं कि आधा देश अंधेरे में डूब गया। आप भी मेरे साथ अमेरिका क्यों नहीं चलते? बेटा मेरे पाँव तो इस जमीन से जुड़े हैं, तो बढ़ आगे बढ़, हम उसी से रोशन हैं। Let's begin. ये पावर है बढ़ते कदमों की। हर देश ये टेक्नोलॉजी खरीदना चाहेगा, किसे देना पसंद करोगे? जिसका पहला हक बनता है भैया, जो कदम इस जमीन से जुड़े रहे, अब वही करेंगे इस देश को रोशन। कुछ कर ऐसा, दुनिया बनना चाहे तेरे जैसा। रजनीगंधा। आपके दुकान में इतने रॉ मटेरियल्स हैं, इनके दाम गिरने की चिंता तो होती होगी। हाँ, पर कोई रास्ता भी तो नहीं है। गिरते दामों के रिस्क से बचने के लिए पुट ऑप्शंस खरीद के हेज कर लो। पर ये माल इतने दिन से यहाँ रखा है, हेज करने से इसके बढ़ते हुए दामों का फायदा नहीं ले पाऊंगा। पुट ऑप्शंस खरीदने से गिरते दामों से बच सकते हो, साथ ही साथ अपने माल के बढ़ते दामों का लाभ भी उठा सकते हो। अरे वाह, चित भी मेरी पट भी मेरी। Presenting Steris Healthcare Private Limited. Steris, quality that you can trust. जब भी लगने लगे प्यास, पी लो आमूल छास। दिन भर रहो फर्स्ट क्लास, पी लो आमूल छास। और कुछ न आए रास, पी लो आमूल छास। जल्दी भर दो एक और ग्लास, पी लो आमूल छास। पेट का ध्यान रखे खास, पी लो आमूल छास। पी लो आमूल छास, रहो फर्स्ट क्लास।